Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Thank you very much for joining me to this session. My name is Hameed, and on behalf of Institute of Freelancing and PF Finishing School, I welcome you all. हमारा आज का session was yet another very exciting and very knowledge-based lecture. There will be two portions. Half of them would be related to the basic color scheming which we use in the fabrics, and the remaining would be the artwork which we create using different platforms, different softwares. So let's start by initially discussing what we have discussed in our previous session. As you all remember, हमारे previous sessions में there were two things which were very prominent that we need to discuss. First was the texture, if you remember. वो कितने टाइप ऑफ टेक्सचर्स यूजुअली मार्केट में अवेलेबल रहते हैं जिनको आप पकड़ कर या जिनसे आप स्टार्ट ले सकते हैं विद योर ब्रांड. एंड इसके अलावा द अदर थिंग व्हिच वी डिस्कस वाज द फैब्रिक टाइप्स. टेक्सचर्स के अलावा द फैब्रिक टाइप्स हमने डिस्कस की थी. एंड आज हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जो फैब्रिक के कलर्स हैं बेसिकली. So fabric colors and dyeing process is to technical language में the person who was from the industrial side they called it the dyeing process. So dyeing process में basically क्या होता है? Let me remind you what from where we start. We started, अगर आपको याद हो probably 3 or 4 lectures before, when we started up के the farmers produce the crop. ठीक है, yarn raw material produce होता है. That is in what colors? Is there anyone who can tell me that what exactly is the raw material color? Chat box में मुझे confirm करें so that कि मुझे idea हो जाए that everyone is with me. तो chat box में just like confirm करें जो raw material होता है जो farmer produce करते हैं, what exactly is the color of that raw material? Is there anyone who can reply me? Or you're not interested to reply me? Something is going wrong here. Let me pause here for a second. What's the problem? What is the problem? White, absolutely. But something is going wrong with my screen sharing has been stopped. Why it is stopped? Because of this internet problem which is since morning. आज को थोड़ा सा लाइट का भी प्रॉब्लम चल रहा है. Let me share my screen again and instead of complete sharing मैं कर देता हूँ so that कि सबको नजर आ जाए that what is happening. Okay, screen shared. Can you see my screen now? Okay, the obvious, the right answers are from 2 students, and that is Saiba Iman and Aksa Bilal. Most prominent students जिन्होंने reply दिया that the color which raw material produces, that's white. And when that raw material reaches to the factory levels, what happened then? उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर different processes involved होते हैं. Those processes are called, जिनमें बहुत सारे प्रोसेस हैं, जिनमें सबसे पहले क्लीनिंग होती है एंड देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस लाइक दिस. लेकिन उसमें एक प्रोसेस ये वाला भी होता है जब वो थ्रेड्स में क्रिएट हो जाता है, नॉर्मल थ्रेड्स में, लाइक जैसे आप लोग कहते हैं अपनी लैंग्वेज में बिल्कुल वो पतला धागे की शक्ल में आ जाता है. फ्रॉम देयर दिस डाइंग प्रोसेस स्टार्ट्स. जब ये धागा मिलकर किसी एक शेप में, कपड़े की शेप में आ जाता है, तो दैट्स बिकम अ बेसिक कलर. बेस कलर आपका होता है व्हाइट, और उसके ऊपर पे बेस कलर के ऊपर डिफरेंट कलर स्कीमिंग्स अप्लाई होना शुरू हो जाती हैं. सो दैट्स द बेसिक प्रोसेस व्हिच यू मस्ट हैव टू रिमेंबर. अच्छा जी, देन उसके बाद व्हाट हैपेंड एज फार एज द कलर स्कीमिंग इज कंसर्न. आई जस्ट थॉट बिफोर दैट आई प्रोसीड टू दैट, मैं आपको बेसिक कलर्स एनाटॉमी जो कि फैशन डिजाइन इंडस्ट्री में सारी की सारी यूज होती है उसका बेसिक्स बता दूं. Okay, the color theory encompasses a multitude of definitions, concepts, and design applications, enough to fill several encyclopedias. However, there are 3 basic categories of color theories that are logically and useful, and the color wheel, color harmony, and the context of how the colors are used. And by the way, all these colors are basically the extract of nature. जो अल्लाह ताला ने चीजें बनाई हैं, डिफरेंट कलर्स बनाए हैं, हम ये सारी के सारी बेसिक कलर स्कीमिंग्स वहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं.
So the color theory creates, yeah, a logical structure of for colors. For example, if we have an assortment of fruits and vegetables, we can organize them by color and place them in a circle that shows the color in relations to each other. राइट, सो दैट्स द बेसिक एनाटॉमी। जो कलर स्कीमिंग्स आपको पता होनी चाहिए, यहीं से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सारे के सारे कलर्स। नेचर से एक्सट्रैक्ट करने के बाद वी प्रोसीड टू दी फैब्रिक्स के, ये सारी की सारी चीजें अप्लाई कैसे होती हैं। अच्छा जी, लेट्स मूव वन स्टेप बैक, हिस्ट्री थोड़ा सा, जस्ट फॉर वन स्लाइड। A color circle based on red, yellow, and blue. That's the basic colors in traditional in the field of art. सर आइजक न्यूटन, यस वही आइजक न्यूटन जो मशहूर साइंटिस्ट हैं, डेवलप द फर्स्ट सर्कुलर डायग्राम ऑफ कलर्स इन 1666. Since then, the scientists and artists like you and me have studied and designed numerous variations of these color scheming. What happened? Basic color scheming के बाद हम उन color schemings को mix and match करने के बाद we came up with so different colors. So during this whole time 1666 के बाद there are so many numerous जो आए artists and scientists, उन्होंने फिर अपने अपने ideas पेश किए, उन्होंने with the color combinations करते करते इसको इस सेंटर वाले सर्कल तक पहुंचा दिया, which we call is today. आज हम इस लोकेशन पे पहुंचेंगे that we have the gradients of colors, right? These are the gradients of colors which we apply on our clothing. लेकिन what are those primary colors? अगर आपको नहीं आइडिया तो this is a very basic and very important scheme for you to remember. One is the primary color scheme. Primary color scheme में basically तीन कलर होते हैं. Those are red, yellow, and blue. In tradition, colors theory used in paint and pigments, primary colors are the three pigments color that cannot be mixed or formed by any combination of other colors. ये basic colors हैं, ये किसी और की मदद से नहीं बनते. All other colors are derived from these three hues. In combination से अगले सारे के सारे बनते हैं. So secondary color में क्या होता है जनाब? यही red, yellow and blue with the combination of orange, green, orange and purple, which comes the secondary color scheme, and these are the colors formed by mixing of primary colors. Primary colors के combination से we came up with these colors, right? Yellow और green और yellow को mix करेंगे तो नहीं, blue and yellow को mix करेंगे तो which comes to greenish. इसी तरह yellow and red को mix करेंगे तो which comes to a bit of orange type of color. Then again blue and red को mix करेंगे तो there is a kind of center color which pops up. So that is the called of secondary colors. अच्छा, इसके बाद सही game actually start होती है, that is called the territory colors. Territory colors क्या होते हैं? Yellow and orange with the combination of red and orange with the combination of red and purple, जिस तरह previous में सारे बने थे, इसी तरह जब ये सारे के सारे combination बनना शुरू होते हैं, these are the colors formed by mixing of primary and secondary colors. So that is the combination जो कि basic colors की मदद से हम the combinations के साथ हम ये different variations बनाना शुरू करें. Okay, so let's proceed one step more, and that is the fabric colors. अब हम आ जाते हैं colors, तो आपको पता लग गया basic colors कहाँ से start होते हैं. Now it comes to the basic story of the fabric colors. आपको आज भी याद होगा, अगर आपने अपना दुपट्टा या कोई ऐसी चीज कलर करवानी है, you go to the market and you see this sort of process which is happening almost everywhere in Pakistan, right? किसी सिटी, किसी जगह चले जाएं एंड वहां पे अगर आप व्हाइट कलर का या किसी भी कलर का दें तो पहले वो क्या करता है, वो पहले कलर को काट करता है, देन उसके बाद रीकलर या उसको रीशेप देता है. सो दिस इज द वेरी ओल्ड ट्रेडिशन जिसमें हम हीट देकर पानी को गर्म करके उसमें कुछ केमिकल्स मिलाकर उसमें कलर्स को फिर ऐड करते हैं, एंड दैट्स हाउ मिक्स करने के बाद वी डिप दिस फैब्रिक टू द वाटर एंड आफ्टर सम टाइम वो कलर्स उसके ऊपर स्टिक हो जाते हैं. एंड दिस इज द सेम प्रोसेस. ये यूके बेस्ड हिस्टोरिकल पिक्चर है, ये इंडियन बेस्ड हिस्टोरिकल पिक्चर है. मोर और लेस द प्रोसेस रिमेन्स द सेम, राइट? लेकिन फिर करते करते क्या हुआ, फिर इस चीज को कन्वर्ट कर दिया यूरोप ने और अमेरिका ने इस इंडस्ट्री को इनटू दिस शेप. अब क्या होता है, बेसिकली जब आपका फैब्रिक फैक्ट्री से बाहर निकलता है, दैट्स इन द बेसिक शेप,
बेसिक कलर स्कीम्स के ऊपर आपको कोई भी फैक्ट्री आपको अपनी प्रोडक्ट देती है. लेट्स से फॉर एग्जांपल, let me took someone from my class, and let's suppose I'm going with Maria Ali, right? So Maria Ali starts to she has his own plan कि चले जी मैंने अपना brand start करना है. So from where I get the basic things, so you must have to remember इस लेवल के ऊपर where we are standing right now, हमें किसी चीज को रॉ मटेरियल बाय करने की जरूरत नहीं है. द फैक्ट्रीज आर मेंट फॉर दिस पर्पस. व्हाट दे डू इज दे बाय द रॉ मटेरियल. उन रॉ मटेरियल की मदद पे एक लंबे प्रोसेस के बाद उसको कलर्स करने के बाद उसको फिनिशिंग प्रोसेस एक फिर एक और फैक्ट्री में भिजवा के वहां से उसकी फिनिशिंग डाइंग उसकी होने के बाद दे गेव दिस इन द बल्क क्वांटिटी. वो वहां से देते हैं किसी भी शेप, जो भी शेप आप चाहें. लेट्स सपोज टी शर्ट्स हैं, शर्ट्स हैं, पोलोज हैं, मेल फीमेल व्हाटएवर, उस शेप में जब वो देते हैं चीज, दैट इज द प्रोसेस जहां से आपका काम स्टार्ट होता है. बाय दोज प्रोडक्ट्स इन बल्क क्वांटिटी और उसके ऊपर अपना ये डिजाइन अप्लाई करना शुरू कर दो. राइट? सो दिस इज समथिंग यू मस्ट हैव टू रिमेंबर. एंड यूजुअली ये होता है कि लोगों को इस प्रोसेस का आइडिया नहीं होता. दे डोंट नो कि ये प्रोसेस चलता कैसे है. एंड फ्रॉम वेयर यू गेट द स्टार्ट, आपको ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्क डन मिलता है. रिमेनिंग हाफ ऑफ द वर्क जो कि आपने अपना एज फैशन डिजाइनर उसके ऊपर अप्लाई करना है, आपका वो प्रोसेस है. एंड फॉर दिस पर्पस दीज मशीनरीज आर अवेलेबल अराउंड द वर्ल्ड. आप चाहे ये चाइना से काम करवा लें, चाहे इवन फैसलाबाद, कराची, लाहौर, बड़े बड़े ऑलमोस्ट सिटीज, इवन इन इस्लामाबाद, रावलपिंडी इंडस्ट्रियल एरियाज में ये सारे प्रोसेसेस अवेलेबल हैं. आप कहीं से जाके भी इसको पिक कर सकते हैं और इसके ऊपर अपनी ब्रांड, अपने ब्रांडिंग के साथ इसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं. सेम इज द केस. दिस इज एक्चुअली द शर्ट्स जो कि नॉर्मल शर्ट्स हैं, लेकिन फीमेल क्लॉथिंग के लिए एग्जैक्टली ऐसे ही सारा का सारा प्रोसेस मशीन्स करते हैं. राइट? So that is very important for you to remember. Then उसके बाद sometimes without the design colors, it reaches to the fashion designers like you, जिसके ऊपर basic color scheme, basic जो colors हैं उसमें provided होता है सारा का सारा raw material. Raw material से आप basically क्या करते हैं, either अपनी हाइट एंड विड्थ के हिसाब से जो भी आपका आर्टिकल का साइज होगा उसके हिसाब से आपने प्रोड्यूस किया. दिस इज फॉर एग्जांपल कंसिडरिंग अ लेडीज टी शर्ट. ठीक है, तो लेडीज टी शर्ट को अगर आपने पिक किया, यू हैव टू स्टार्ट योर वर्किंग लाइक दिस. दिस इज द फर्स्ट कलर जो कि बेस कलर आपको मिला. यू हैव टू कम अप विद डिफरेंट वेरिएशंस एंड बाय यूजिंग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी देयर इज नथिंग एल्स. सारी दुनिया में ये काम कंप्यूटर पे होता है. सारी दुनिया में जो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर्स हैं, दोज आर कॉल्ड फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर्स, उनकी मदद से ये काम होता है. और करते करते ये प्रोसेस आपके ब्रांड के साथ मार्केट में लॉन्च होता है. राइट? सो फॉर एग्जांपल उसके बाद देयर आर मैनी प्रोसेसेस जो आप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू आर नॉट गुड इन द कंप्यूटर्स, या इफ यू डू नॉट वांट, लाइक वो हमारी क्लास के बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स दे आर एक्चुअली वेरी मच रिलक्टेंट इन एक्सेप्टिंग दिस रियलिटी कि हम फोटोशॉप के इलस्ट्रेटर में कुछ डेवलप करें. सो दे हैव दिस चॉइस, दे हैव दिस ऑप्शन टू रीड्रॉ दिस बाय यूजिंग पेंट्स. एक्रेलिक पेंट्स जो कि यूज होते हैं इस इंडस्ट्री में फैब्रिक्स के ऊपर, दोज आर कॉल्ड एक्रेलिक पेंट्स. एक्रेलिक पेंट्स विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल्स हम इनके साथ इस तरह प्ले करते हैं. So the other option is something like this computer generated artwork, या maybe pencil drawings, and we will use the same kind of arts, graphics on these shirts, female shirts, male shirts, जिनके ऊपर भी आप अप्लाई करना चाहिए. राइट? अगर ये ऑप्शन में भी आपको चूज नहीं है तो देयर इज अनदर ऑप्शन. हम इसे बेसिकली करते हैं कि आप एक्रेलिक एंड पेंट्स को लेकर आप ब्रशेस से हैंडमेड ड्राइंग करते हैं, एंड हैंडमेड ड्राइंग्स को फिर आप करते हैं अगेन कंप्यूटर्स के थ्रू स्कैन कॉपी इन द हायर रेजोल्यूशन. यू प्रोवाइड दिस टू द मशीन्स एंड दोज मशीन्स टेक इन द बल्क क्वांटिटी में वो सारा कुछ आपके लिए प्रिंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करवा देती है. अगर आपको यकीन ना आया तो यू कैन गो, मैं आपको थोड़ी देर इस सेशन के एंड पे मोस्ट ऑफ दुनिया का सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है दैट्स समवेयर इन न्यूयॉर्क समवेयर, वहां उसकी एक लिंक आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, यूट्यूब का वीडियो का लिंक.
you can just view this video and you will find out कि उनके पास ये सारे के सारे process किस तरीके से चल रहे हैं. So my idea and my suggestion was just this कि मैं during this whole course आपके साथ ज्यादातर टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें शेयर करूं रादर के वही स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजीज पुराने तरीके या वो सारी की सारी. दैट्स नॉट माय फील्ड. इज आई बिलीव इन द टेक्नोलॉजी. सब कुछ जब टेक्नोलॉजी करती है तो व्हाई वी शुड नॉट ऑफ द टेक्नोलॉजी. ओके जी. अब इसके बाद व्हाट हैपेंड. सो दैट इज द काइंड ऑफ वाइट ब्रांडेड शर्ट जो आपको मिलती है सिली हुई टू योर फॉर योर ओन ब्रांडिंग. आप बेसिकली ये चीज परचेज करेंगे मार्केट में लेट सपोज इन 100,000 की क्वांटिटी में. ठीक है. अब आपने इसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग स्टार्ट करनी है. हाउ टू स्टार्ट योर ब्रांडिंग अपॉन दिस. सो दैट इज समथिंग लुक लाइक कुछ इस तरह की चीज. फिर इसके ऊपर पॉपअप्स करना शुरू कर दें या यू कैन कम अप इवन विद योर ओन पिक्चर. यस. माई होल आइडिया इज टू गिव यू ऑलमोस्ट एवरी ऑप्शन कि ये कैसे आप लोग करेंगे. एंड फॉर दैट पर्पज हम लोगों ने फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर को चूज किया था. अब क्योंकि गलती से भी मेरा मिस्टेक, मेरा प्लान ये था कि मैं सीक्वेंसेस में आपको चलाऊंगा. कलर स्कीम वुड ओनली स्टार्ट ओनली एंड ओनली देन कि जब हम फोटोशॉप में कलर्स को यूज करेंगे. लेकिन वो क्योंकि दरमियान में इन बिटवीन सम स्टूडेंट्स थॉट प्रोबेबली कि शायद सारा कुछ ही हमने फोटोशॉप ही सारा कुछ करना है, तो देयर वाज नथिंग लाइक दिस. इसके पीछे पूरा एक प्लान था. लेकिन एनीवे I just do not want to go into this. So हमारा first half of the session that completes here. अब हम ये basically करेंगे कि अगले remaining session में हम यही process सारा का सारा by using technology, Photoshop, Illustrator, हम ये सारा कुछ उसके ऊपर कैसे place करेंगे. That is something our second part of lecture. So let me pause here for a moment. Let me stop here the video recording as well because